Hello children. In this video, we are going to learn about the first chapter of Unit 3, that is Understanding Fashion. In this unit, we are going to learn about the terminology in the fashion industry, like haute couture, high-end ready-to-wear, and mass-produced garments. So let's get started. So what exactly is fashion? हम लोग अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, अगर हम उनको ध्यान से देखें तो आपको उसमें भी फैशन नजर आएगा। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजों में चेंजेस होते रहे। ठीक है, सो फैशन इज एन एवर चेंजिंग एंड इन्फ्लुएंशियल फोर्स that impacts our everyday lives. Now, if you don't get to see these changes, what would happen? Life will become very monotonous. तो चेंजेस इम्पॉर्टेंट है, और फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ देयर इज नो चेंज, it won't be, there would be no influence on the people, or you cannot influence people to buy those products or garments that you are developing. और हमारी लाइफ क्या है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपने लिए कॉस्ट्यूम्स डिसाइड करते हैं, हम फैशन डिसाइड करते हैं. So our lifestyle, that is the way we live, what we eat, and the activities we indulge in, and how we spend our leisure time are all manifestations of this dynamic force. That is जो influential force है, वो उसको हमेशा हमारा lifestyle उसको impact करता है. कैसे? अगर आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सो आपका लाइफस्टाइल क्या है? Easy to go costumes or garments, and that is why the fashion today is comfort wear at large. We are not looking for more elaborate garments or exaggerated garments at the time. Now, there was a designer, very famous designer, Coco Chanel, and a definition of fashion that's given by Coco Chanel is that fashion is not everything that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street. Fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening. So इसीलिए हम लोग कहते हैं फैशन इज ऑल अराउंड अस. सिर्फ हमारी क्लोथिंग में या हमारे कॉस्ट्यूम्स में फैशन नहीं है, पर फैशन हर जगह पर है. आप अपने अराउंड चीजों को देखो, यू विल फाइंड फैशन इन दैट. सो एग्जैक्टली फैशन क्या है? सब पूछते हैं फैशन क्या है. सो फैशन is basically a style that becomes popular at one given in time. That is fashion. हम लोग कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर कलर पहने हुए देखते हैं या एक स्टाइल को फॉलो करते हुए देखते हैं और हम कहते हैं ये फैशन है, because we find many people following it or buying or wearing that particular style. एक दूसरी डेफिनेशन वेबस्टर डिक्शनरी ने दी है. वेबस्टर के अकॉर्डिंगली फैशन है एक प्रिवेलिंग कस्टम, यूसेज और स्टाइल. सो करंटली क्या चीज इन है, उसका क्या यूजेज है, आपके लिए क्या यूज है, और कौन सा स्टाइल आप पहनना पसंद करते हो, अकॉर्डिंगली वो चीज फैशन में आ जाती है, एंड वी फील हैप्पी possessing that particular costume. Fashion reflects a society's prevailing customs as well as its potential economic and cultural state at any given point of time. So what exactly is fashion? वो आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस कल्चर को फॉलो करते हो, आपके जो कस्टम्स है, आपकी कंट्री में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है आपकी कंट्री की, आपका जो कल्चर है, all these things are reflected through fashion at a given point in time. So अगर इंडिया के फैशन की बात करें, जो बिफोर इंडिपेंडेंस था, so it was very much the traditional custom based fashion. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे हमारी कंट्री में, सो हमारे फैशन पे इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिश कॉस्ट्यूम्स ने.
and that is how the trousers were introduced for men, shirts were introduced for men at large. That is how blouses were introduced for women's wear. So हर एक टाइम में फैशन चेंज होता रहता है और वो प्रिडिक्ट करता है, वो डेवलप किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रिडिक्शन ऑफ अ डिजाइनर. सो एक डिजाइनर प्रिडिक्ट करता है फैशन को एडवांस में. फैशन इज मच मोर देन जस्ट क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज. वही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पीछे 2-3 स्लाइड से कि फैशन बेसिकली सिर्फ क्लोथिंग में, कॉस्ट्यूम्स में या फिर एक्सेसरीज जैसे फुटवेयर है, आपका हैंड बैग्स है, ज्वेलरी है. इट्स नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन दैट, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मेनी अदर थिंग्स. सो दैट्स व्हाई द डिजाइनर कोको शैनल ऑल्सो सेड कि फैशन इज एवरीवेयर. स्काई में है, आपके अराउंड हर एक चीज में फैशन है. Fashion is also the spirit and creativity which goes into their creation, the economic aspect of manufacturing and marketing, and the socio-cultural and psychology of wearing fashion. So, fashion क्या है? एक creative business है. उसमें एक डिजाइनर की क्रिएशन प्रेजेंट करी जाती है, एक डिजाइनर उसको प्रेजेंट करता है, एंड दैट इज हाउ we people we get to know and we start following it and we start adapting it as well. But apart from that, fashion हमारी कंट्री की एक इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको भी डिपिक्ट करता है. That is today in our country, if we are ready to buy only domestic brands, that is जो brands हमारी कंट्री में ही बने हैं, वहीं पे मैन्युफैक्चर हुए हैं, वहीं पे मार्केटिंग हुई है, तो वो हमारे लिए चीप होंगे, हमारे लिए अफोर्डेबल होंगे. धीरे धीरे जैसे एक्सपोजर मिलता है हमें इंटरनेशनल मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का, दैट इज हाउ वी स्टार्ट डिमांडिंग फैशन फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. तो हमारी कंट्री वुड बी ओपन टू having international brands, like the case in most of the countries these days. But again, अगर आप बात करो पहले के टाइम की, that is before independence, so that was not the case. Earlier, people used to follow what was locally developed. But अब because हमें exposure है, हमारे पास इकोनॉमिकली हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है, so इसीलिए हम लोग बाहर से भी चीजें दूसरे एक्सपेंसिव ब्रांड्स, डिजाइनर वेयर ब्रांड्स से भी हम गारमेंट्स और प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू हैव सो मेनी डिजाइनर वेयर ब्रांड्स नाउ प्लेस्ड इन योर कंट्री एज वेल. नाउ देयर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ क्लोथिंग. सबसे ऊपर आता है haute couture, दैट इज हाई फैशन. उसके बाद में आता है रेडी टू वेयर डिजाइनर लेबल्स, और फिर सबसे नीचे आता है मास प्रोड्यूस्ड रेडी टू वेयर मार्केट. नाउ ये एक ट्रायंगल के फॉर्म में आप समझ सकते हो कि haute couture ट्रायंगल में सबसे टॉप में होता है, रेडी टू वेयर डिजाइनर लेबल्स उसके नीचे आते हैं, और मास प्रोड्यूस्ड रेडी टू वेयर लेबल्स उस सबसे नीचे आते हैं. तो इन सब में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक आउटलाइन है जो हम समझ लें अभी, एंड दैट इज haute couture, जिसका कि जो फ्रेंच टर्म है जिसका इंग्लिश मीनिंग है हाई फैशन. This basically means garments that are developed by designers, and they're not multiple garments. वो डिजाइनर एक ही गारमेंट बनाता है एक तरह का, उस पर वो बहुत रिसर्च करता है, तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट, इसकी वर्कमैनशिप, सब कुछ काफी हाई एंड होता है, और इसीलिए ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. सेकेंड इज रेडी टू वेयर डिजाइनर लेबल्स. जैसे पहले सिर्फ डिजाइनर्स अपनी एक कलेक्शन लेके आते थे, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कलेक्शन. अब डिजाइनर्स क्या करते हैं, अपार्ट फ्रॉम वो इंडिपेंडेंट कलेक्शंस, वो रेडी टू वेयर मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं. बिकॉज वन ऑफ अ सेलिब्रिटी तो एक क्लाइंट आएगा ना उसके पास में, मे बी इन 1 month or 15 days or something like that. बट ये जो रेडी टू वेयर लाइन है एक डिजाइनर की, जिसमें कि वो कॉस्ट्यूम्स बना रहा है स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे, ही वुड गेट मेनी क्लाइंट्स हु वुड बी वॉकिंग इनसाइड मनीष मल्होत्रा रेडी टू वेयर डिजाइनर शोरूम, और वो वहां से परचेज कर ले, राइट. एंड देन इज मास प्रोड्यूस्ड रेडी टू वेयर ब्रांड्स और लेबल्स. अब ये लेबल, आप कोई भी लेबल पिक कर लो मार्केट से, जिसमें कि मासेस को, वॉल्यूम को केटर किया जाता है.
सो अब इसके बाद में जो मेरी स्लाइड्स होंगी, जो मेरी वीडियो होगी, दैट विल टॉक अबाउट दीज 3 कैटेगरीज सेपरेटली, जिससे कि आप वन वन करके आप क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हो, एंड यू विल गेट टू नो द कंप्लीट डिटेल, अ प्रॉपर नाइस डिटेल इनटू ईच वन ऑफ देम. सो अगेन इसका एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, जिसका नाम इस चैप्टर के नाम से होगा, और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपकी सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी. सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट विल गो इन दैट. Next video will talk about haute couture. Next will be about ready to wear designer labels. After that, it would be mass produced ready to wear brands or labels, and that is how ये पूरा जो एक chapter है वो अलग अलग videos की form में आपको मिलेगा. So please do watch the video, listen to it carefully. In case you have a doubt, my email address is given on each slide. That's Creatives by Rachna. You can always get back to me on that. And again, I keep repeating, children, if you have a doubt, difficulty, just feel free to get back to me. I'll try to help you with the same. Do like the video, share it with your friends so that there are more and more people who and children who can take advantage of this. Thanks for watching.